Dr. Surve has done her post graduation in ENT from Nair Hospital in Mumbai, and for the last 17 years, she has been practicing at Sangvi Hospital, Lokhandwala, and she has been guiding patients about vocal care and ear, nose, and throat related problems. Today, it is indeed our privilege to have her with us. Dr. Surve, I want to begin with the most important uh, issue or the most important question that all of us have before we get into other details. Uh, why do voiceover artists, or since you deal with them, or singers, do you Yeah, agree that we take our voice for granted? that is because you normally don't know what there are pros and cons depending on how you use your voice. Uh, you feel voice is to be taken lightly as the other parts of the body, but that is the bread and butter, or you might say it is a passionate thing, and without which voiceover artists can't perform. So that part of the body has to be taken care of utmost. Which we do not really, because हम हमें लगता है कि यार चल तो रहा है, सब ठीक है, चल रहा है, मगर पता नहीं चलता कब इश्यू हो जाता है. So I And think that, yeah, somebody has to take them from the darkness to the light yeah. and enlighten them how to behave so that their career or whatever the passion is, they can pursue that to a maximum extent. I Am I remember clear you to that? telling this to me. I remember you telling this to me one when during one of the times that I came to you for a throat issue. You very clearly told me that my endeavor is, it is not something as shallow as just treating it. I want to ensure that you are able to exploit the potential of your voice to the fullest. And I think that is exactly what an ENT, or especially someone specializing in voice, should be looking at. So, Doctor, if we start from the very beginning, I am sure, including me till some time back, very few of us are actually aware about द एनाटमी ऑफ द वॉइस, कि आवाज़ होती क्या है, क्योंकि हमारा इतना इम्पोर्टेंट औजार है, अपैरेटस है, इक्विपमेंट कहिए, या हमारी शरीर का बहुत अहम हिस्सा है. डू यू वांट टू टेक अस थ्रू व्हाट एग्जैक्टली इज द एनाटमी, द फिजिकलिटी ऑफ द वॉइस? Yes, yes, definitely. Most of the times people feel that voice जो आता है वो गले से ही आता है. बट हम लोग जो बात करते हैं, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे our body presents to the other people. Like the brain, the brain gives command, and then only you start speaking. It includes the lungs, the larynx, the pharynx, nasal cavity, the tongue, and the lips. So the anatomy lies in the larynx. Larynx is actually, it lies in your neck. It is a specialized organ which produces the voice. Can I have the slides, please? Yes, you want to add the slides, ma'am? I think you can add the slides from your side. Yeah, they have come actually. Uh, you And I can think see I the can see some slides. questions. So, guys, whoever is writing a question, just I'm going to request that towards the end of the session, while Dr. Surve sets up the slides, towards the end of the session, we can take the questions. तो आप अभी अगर लिख देंगे ना सवाल, तो शायद मैं मिस आउट कर जाऊंगा, स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप 6:45 के आसपास आप सवाल लिख लीजिए. That would be nice. And there's a special call out for Dr. Jain Sampath, who is watching. Hello, Dr. Sampath. Okay, ma'am, please carry on. Yeah. So the larynx lies in the anterior part of the neck, and it is a tubular cavity which is connected to the windpipe lower down, and above it is connected to the pharynx, the tongue, the nasal cavity over here, and your mouth. Larynx is a specialized cavity
which has three parts. The glottis, which is very important for everybody. It Okay. contains the vocal cords and the जो हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं, तो Hmm. this is the vocal cords. Lower down it is the subglottis, and over here there are some mucus secreting glands which moisturize the vocal cords, and above there is this supraglottis, which is the area which contains the false vocal cords. These false vocal cords are also ligaments which are connected to the larynx, and they also help to seal off the laryngeal inlet when you eat. The Okay. epiglottis is lies just above, हम लोग जिसको परजीब बोलते हैं हिंदी में. फर्जी. परजीब, like what do you एपिग्लॉटिस say? तो हमको यही याद है, वो खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, माय नेम इज खान वाला, जो नुक्ते के लिए काम आता है. No, it is actually a small muscular object Okay. or an organ, which is a cartilage, and it is Hmm. attached to the larynx. But the important part of epiglottis is that when you are swallowing the food, it just shuts off the laryngeal inlet so that Correct. it does not go into the windpipe. Your food does not go into the windpipe, and Yes. it goes directly into the esophagus. Fantastic. That, Coming to that that the makes it very clear. Perfect. Yeah. The next slide, it contains the larynx. This Hmm. larynx has three cartilages. The Hmm. first is epiglottis, thyroid, and the cricoid. I won't go into the details, but many group of muscles are attached to these cartilages, Okay. and these group of muscles, they are important to us because they help in modulating your voice, and they Ah. help in shaping the vocal cords, Okay. so they are important. And means if your vocal cord is lax, you will have a low pitch voice, and if your vocal cord is taut, you will have a shrilled voice. That I will explain Yeah. afterwards. I think that is something that we would like to understand a little better. Yeah. The next slide, I'll Okay. just. Yeah. These are the two vocal cords. The Perfect. first one, this is the true vocal cords, and above over here, this is the vestibular fold, that is the false Okay. vocal cords. Okay. Okay. Over this is a laryngeal inlet that is called the glottis, Okay. and normally when you eat, this inlet is shut tight so that the food does not pass into the glottis or the Okay. trachea. Sorry. Okay. And this is the anatomy of the larynx, like Okay. the muscles, and there are many vessels also they supply the blood, but the important part for general people is the nerve supply, which there are two nerves, that is the superior laryngeal nerve and the inferior laryngeal nerve, that is superior laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve. So the superior laryngeal nerve actually is it supplies it has two branches, and it supplies the muscles, and the sensory part is also there. Sensory part is much more important because if food goes into the larynx, you have a coughing reflex that is caused by this nerve, हाँ, sensory. कई बार वो खाना हम कहते हैं कि फूड पाइप विंड पाइप में चला गया और खांसी आ जाती है, पानी पीते वक्त भी कई बार ऐसा होता है. Yes, that is the करेक्ट. sensory nerve. The next nerve is the recurrent laryngeal nerve, which is which is supplies the muscles of ओके. the larynx, and which is very important because it comes from the chest. It has two nerves, the right and the ओके. left. And the left laryngeal nerve, it travels from the thorax. If by chance in the lungs, if there is some mass or some other problem like injury, then the muscles, they the nerve is cut,
then the paralysis happens of the vocal cords. Oh boy. Okay. 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 I'm sure when we talk about the vocal disorders, Yes. the common vocal Yeah. disorders that people suffer from these days, but the layman doesn't even know about it. किस Yes. इस तरह के vocal disorders होते हैं. I'm sure that time you will probably give us a Yes. little more Yes. detail Yes. about that. Yes. Okay. Yes. Uh, this is about the anatomy of the larynx, सो हम actually. जब कहते हैं डॉक्टर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट जब कहते Yeah. हैं कि मैं एकदम मैं लेमैन की भाषा में अगर मैं पूछूं, हम कहते हैं कि आवाज़ पेट से आनी चाहिए, तो ज़्यादा गहरी आवाज़ आती है या ज़्यादा बेटर प्रोजेक्शन आता है, तो उसको अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएं कि ब्रीदिंग पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है स्पीच के लिए, और हाउ डज वन नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग, स्पेशली फॉर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. Yes, yes, definitely. The breathing pattern, the voice production actually is uh, uh, like the sound production, how it happens. The sound production happens by multiple organs, the lungs, then the larynx, the pharynx, the nasal cavity, and the lips and the tongue. One second, I'll show you the next slide. Yeah, how is the voice created? Generally, there is the generator, which is the lungs, Okay. then the Oh, interesting. vibrator, So the that lungs is is. where it is generated. Okay. Yes, yes. The generator is the lungs where आप अगर when आप सोचो कि आप बात करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप सांस एक भर लेते हो and then you speak, you start Correct. speaking. So Correct. the air is filled into the lungs. The air just fills into the lungs, your vocal cords then get shut, and the Okay. air in the lungs, it presses the vocal cords from below, and then it comes out in gaps. So this air which comes out from the larynx is a crude sound. It is not an intellectual sound. Okay. This air then just passes from the lungs, the larynx, to the pharynx, and from the pharynx it goes to the nasal cavity. Okay. From the nasal cavity is the next step, which is the resonance, which gives Yeah. resonance. The air just Wow. circulates in your sinuses. Correct. If your sinuses are filled with mucus or polyps, the resonance will be dampened. If you blow in a vessel, okay, if you blow in a vessel, you will have a resonance of that air. But if you blow in a vessel filled with water, Correct. your resonance is dampened. Absolutely. What a Similar wonderful way, example. Yeah. What a wonderful example. yeah, similar way, the if your nose is filled with sinusitis or you have allergies, then this will have an impact on your voice. Of course. Yeah, ऑफ कोर्स. and from व्हाट the. एन अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये हम हमेशा ये हम देखते हैं कि जब कॉफ होता है या नाक नाक जिसको कहते हैं नाक जाम हो गया या सर्दी भरी है, तो आवाज़ बैठ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ बैठ गई है. Yeah. सो व्हाट यू आर सेइंग इज द रेजोनेंस गेट्स अफेक्टेड इफ यू डू नॉट हैव अ क्लियर nasal cavity area, because that is a very Yes, important yes. chamber for the resonance to develop. Okay. Yes, yes. From there, then your tongue, it moves and your lips move and Of course. you articulate the speech and then you speak. Then Correct. it is an intelligent, or you can understand that speech. But the throw comes from your larynx and your Correct. lungs. So the Perfect. main important part is your lungs and building the strength. You said your question that breath control. So it comes from your lungs, and then that comes out from the larynx. ओके. आई थिंक ये बड़ा अपने कमाल का एक आई थिंक अगर इसको समराइज करूँ तो हम जब हमेशा बात करते हैं कि ब्रीदिंग, अगर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हिसाब से बात करूँ, हम सब के हिसाब से, सो आई थिंक बाय एक्सप्लेनिंग द एंटायर anatomy and the entire process of the physical creation of voice, I think one thing is very clear.
that the entire foundation of the voice is your breath. एंड कितना ज़रूरी है अपनी श्वास पर, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर काम करना, क्योंकि लाइक यू मेंशन द लंग्स इज वेयर द वॉइस इज जनरेटेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द जनरेटर। और वहीं पर आप Yeah, श्वास yeah. भरते हैं, और वही श्वास जितने प्रेशर से ऊपर आती है, जितने डायनामिज्म के साथ ऊपर आती है, और ऊपर आते वक्त आपके वोकल कॉर्ड्स को ये स्पर्ट्स में खोलती है, और तब आपका एक फिजिकल Yes, साउंड क्रिएट होता है। एंड आई थिंक एक आपने yes. बड़ी कमाल की बात कही कि इंटेलिजेंट साउंड नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस कहीं Yes, ना it कहीं is a मस हाँ, वही crude मैं कह रहा हूँ कि voice. इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं मस्तिष्क से भी आती है, कि हम सोचते हैं मैं कि हमको क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सॉरी टू इंटरप्ट, और एक ऑर्गन इन्वॉल्व है दर्पण जी, हम्म, दैट इज योर ईयर। हाँ, ओके। अगर अगर आपने देखा है कि जो बच्चे बचपन से दे आर हियरिंग प्रॉब्लम, दे हैव हियरिंग प्रॉब्लम और हियरिंग डेफिसिट है, दे कैनॉट स्पीक। सो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट। If you hear, then only you can speak properly. वाओ। हम्म, That वेरी is, इंटरेस्टिंग। yeah, whatever you are listening, then only you can form the syllables and articulate your speech. शायद द फनी थिंग इज डॉक्टर सुर्वे, कि हम जब वॉइस ओवर्स की बात करते हैं और वॉइस ओवर ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम लोगों से यही कहते हैं कि इफ यू वांट टू स्पीक बेटर, लिसन बेटर, द मोर यू लिसन Yes, द बेटर। हम तो इसको मेडिकल टर्म्स में नहीं कहते हैं, बिकॉज हमारा दैट्स नॉट व्हाट वी स्पेशलाइज इन। वी स्पेशलाइज इन द क्रिएटिव transformation of your speech into something magical, into your voice into a magical element of speech। उसके लिए भी yes, हम यही कहते हैं कि चाहे आपको भाषा सीखनी है तो सुनिए, अगर आपको मॉड्यूलेशन भी बेहतर करना है तो लिसन मोर। और आज आपने कहा कि मेडिकली भी the element of your ear is very, very critical to the element of your speech। yes, yes, definitely, definitely. अगर आप सुन ही नहीं पाएंगे प्रॉपरली तो आप बात कैसे कर पाओगे? करेक्ट, करेक्ट। हाउ अमेजिंग, इट्स फनी बिकॉज तभी हम लोग कहते हैं ना कि लिसन मोर एंड स्पीक लेस, हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट इज सो अमेजिंग। हम Yes, हम yes. इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकली भी यही बात कहते हैं ना, सुनो, लिसन मोर स्पीक लेस। गणेश जी को इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं? ताकि ज्यादा सुने और कम बोले। तो ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इट इज सो अमेजिंग। Very much. नाइस। Now for the larynx, अगर प्रॉब्लम देता है कभी, if your vocal cords or your voice it gives problem, then there are medical ways to detect that. हम लोग जल्दी से अगर किसी को प्रॉब्लम है गले का, तो अगर डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं तो डिटेक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रॉब्लम कैन बी डन बाय टू वेज। दैट इज द लैरिंगोस्कोपी, जैसे जिसको बोलते हैं दूरबीन से देखना। एंड अभी नाउअडेज द लैरिंगोस्कोप इज मोर एडवांस, दैट इज द स्ट्रोबोस्कोप, which is the recent advancement, जहाँ पे vibration of the vocal cords can be seen and early detection or the early formation of a polyp or a nodule can be detected, which is just starting to form, ओके। and the treatment can be done earliest possible, क्योंकि वो तो ये या टेल हाँ, मी। नहीं, नहीं, तो ये पॉलिप और या पॉलिप ये होता क्या है, पॉलिप या नोड्यूल? क्योंकि हम लोग बहुत सुनते हैं इसके बारे में। यस, यस। पहले मैं आपको जस्ट एक वीडियो दिखा सकती हूँ। हाँ, दिस डू इज वी द हैव द वीडियो? एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स एंड दिस ओके, इज द स्ट्रोबोस्कोप। ओके, लेटेस्ट वन है जो विच हैज अ सिंक्रोनाइज्ड फ्लैशिंग लाइट to visualize the vocal fold vibration. Normally, in laryngoscope, we can only see the laryngoscope and what we can see on the vocal folds or ओके, surrounding area. But the stroboscope, it just catches the vibrations of the vocal folds. And where there is some problem in the vocal fold, there is loss of vibration. Can ओके। we have the video, please?
Okay, do we have the video? I think we haven't नहीं, got the video, Dr. Survey. no, you don't have the video. Yeah, we don't have the video. If you can send it as a WhatsApp to us, we'll immediately integrate it. Yeah, yeah. Okay. Just 1 second. I'll just see. Yeah, Or by that time, I'll speak about it. sure. So this, what we Yeah. are seeing, is this the vocal cord? What we are seeing, this image in front Yeah, of yeah. us? It is the vocal cord. It is the Okay, vocal cord, and this is the stroboscopic image. This is the stroboscopic image, and okay. So okay. the सो एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएं कि स्ट्रोबोस्कोपी होती क्या है, कि उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि आजकल बहुत इट हैज बिकम अ वेरी कॉमन प्रोसीजर. yeah, it is a fiber optic scope which is स्कोप, अच्छा, passed एक पाइप, through. एक पतला सा पाइप होता है यस, बेसिकली. एक पतला सा पाइप रहता है जो नोज में से जाता है, हाँ, एंड इट वो आपके वोकल कॉर्ड्स को आपको बोलना पड़ता है ई, एंड दैट इज कॉट ऑन द स्क्रीन जहाँ करेक्ट. पे वाइब्रेशंस कैच किए जाते हैं, एंड दोज वाइब्रेशंस आर कैलकुलेटेड. सो अगर लॉस ऑफ वाइब्रेशन किसी एरिया में है तो वो कैच किया जाता है, एंड दैट इज डायग्नोस्ड एज वोकल फोल्ड, वोकल पॉलिप और नोड्यूल. करेक्ट. तो वो कैच किया जा सकता है. तो बेसिकली कहने की बात ये है कि अगर आपको कोई वोकल इश्यू है, और अगर आप किसी ईएनटी के पास जाते हैं और अगर आपको सजेस्ट किया जाता है कि लैरिंगोस्कोपी या स्ट्रोबोस्कोपी कराएं, तो उससे आप मुकरिए मत, उससे हिचकिचाइए मत. और स्ट्रोबोस्कोपी का तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पर भी कई बार स्ट्रोबोस्कोपी हो चुकी है, तो डरने की कोई बात नहीं है. इट इज़ अ वेरी वेरी, एक पाइप होता है जो आपके इट नाक इज से एन आपके वोकल ओपीडी कॉर्ड्स तक. प्रोसीजर. हाँ, इट्स एन ओपीडी, ओपीडी इट्स एन प्रोसीजर. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आप इमीडिएटली जाके करवा सकते हैं. और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, इक्विपमेंट ऐसे आ गए हैं, ये एक पतला सा पाइप होता है जो आपके नाक से जाता है और आपके वोकल कॉर्ड तक जाता है, और वो उसके अंदर एक कैमरा होता है, आप समझ लीजिए, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो वो आपके वोकल कॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करता है, और जो डॉक्टर होते हैं उनको स्क्रीन पर दिखाई देता है और वाइब्रेशंस उनको दिखाई देते हैं, जैसा मैम ने कहा. सो स्ट्रोबोस्कोपी इज़ अ वेरी एडवांस्ड प्रोसेस जहाँ पर मेरे ख्याल से आपके वेन्स वगैरह, म्यूकस, वो सब आपका नोटिस हो जाता है ना मैम? यस, इस यस, हाँ, यस, यस, करेक्ट, यस, करेक्ट, यस, करेक्ट. तो ये बहुत यस, इंपॉर्टेंट एक डेफिनेटली. इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, बट इट इज़ द बेस्ट प्रोसीजर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विथ योर वोकल कॉर्ड्स, एंड what can be wrong with it is what Dr. Surya will now tell you, कि किस किस तरह के vocal disorders हो सकते हैं. Before I come यस. to another very important question is कि हमें कब, एक वॉइस आर्टिस्ट को कब एक वार्निंग बेल होनी चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि ये मियरली थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है. आई विल कम टू दैट लेटर, बट इस वक्त डॉक्टर सुरवे इज गोइंग टू टेल अस कि किस तरह के कॉमन वोकल डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल. यस मैम. Yes. Can I have the slide? Yeah. या. Yeah. These are the common disorders. This is the commonest in voiceover artists or the singers or the teachers. That is the vocal cord nodule. The vocal cord nodules are small bumps. If you can see this, यस. yeah, हाँ, this हाँ. is the small bump. Basically, this happens because of voice overuse, और बराबर से अगर केयर नहीं किया गया, वोकल हाइजीन नहीं किया गया, एंड आप काम करते ही गए, इवन इफ यू हैव अ वार्निंग बेल, लाइक कहीं पे आपको गले में खराश है, या आपने कहीं पे बहुत रिहर्सल्स किया, या यू हैव अ वेरी लॉन्ग टायरिंग डे ऑफ वर्क, तो तभी अगर आप कंटिन्यूअस चालू है आपका काम, तो ये वोकल कॉर्ड पे स्वेलिंग्स आ जाते हैं, स्मॉल स्वेलिंग्स आ जाते हैं. एंड जैसे अगर आप कोई चप्पल डालते हैं, शूज डालते हैं, एंड न्यू शूज है, एंड आपको अगर शू काटा, एंड आपने उसको अगर कुछ रिपेयर नहीं किया, लाइक करेक्ट. यू डोंट चेंज दैट शू, एंड शू बाइट हो आप जाती उसी है. में चलते जाते हो, तो वहां पे कैलोसिटी हो जाती है, या वो करेक्ट, हार्डेंड हो जाता है. तो करेक्ट. सिमिलर वे, अगर आपने
वोकल हाइजीन या वोकल केयर नहीं किया और आपने ओवर यूज करते रहे, तो वोकल नोड्यूल्स हो जाते हैं. The symptoms of vocal nodules are hoarseness of voice. The Okay. patient will have hoarseness of voice, and आप अगर बहुत बात करते हो लाइक टीचर्स, तो उनको एक फटीग आ जाता है. वो नॉर्मली कहते हैं कि मेरा गला दुखने लगता है, या Correct. शाम तक मैं बात नहीं कर पाता हूँ. हम्म. तो तो ये क्या दिस ये हैपेंस. सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम पर होता है? क्योंकि इस तरह के लक्षण तो डॉक्टर कई बार हमें नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड में भी होते हैं. तो हाउ डज वन नो कि यार ये दिस कुड बी समथिंग मोर देन something that can be treated immediately with a antibiotic or an anti-inflammatory or something like that? एक्चुअली वोकल कॉर्ड नोड्यूल के लिए आपको हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है. Okay. एंड द बेस्ट थिंग इज वॉइस रेस्ट. वॉइस रेस्ट इन बिटवीन गैप्स, लाइक कंटिन्यूअस. आप अगर 6 घंटे 7 घंटे बात कर रहे हैं टू अ बिग ह्यूज क्राउड, then ultimately the vocal cords are like strings of guitar. Correct. आप छेड़ते जाओगे उसको तो वो बजते जाएगा, बट अल्टीमेटली वो लैक्सिटी आ जाएगी, एंड कहीं ना कहीं उसको हार्म पहुंचेगा. सो यू हैव Correct. टू हैव अ रेस्ट समवेयर. एंड Absolutely. I get या that. Yeah. या सो दिस इज द वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स. इसको Okay. अगर आप चेकिंग करवाते हो, तो एवरी वोकल कॉर्ड नोड्यूल डज नॉट नीड अ सर्जरी. Many a times vocal cord nodules they settle with speech therapy. आप बराबर से बात करना अगर सीखते हो एंड वोकल हाइजीन मेंटेन करते हो, तो वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स भी सेटल हो जाते हैं. Okay. वेरी Okay. स्मॉल वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स दे सेटल डाउन. Okay. या द And what about a नेक्स्ट. polyp? या That is नेक्स्ट something वन that इज is द very close पॉलिप. to my heart, and it used it, at या one point of time it was also a part of my vocal cord. So please tell us about a polyp. Yeah, the vocal cord epithelium और the covering जो vocal cord पे रहता है, वो एकदम पतला रहता है. एंड उस पे वापस यही है कि अगर vocal cord trauma हो जाता है, like too much talking, too loud talking in a noisy environment. Like I tell my patients कि आप अगर पब में जाते हो तो बिल्कुल बात मत करो, या किसी फंक्शन में जाते हो और वहां पे स्टीरियो है, तो उसके बाजू में बिल्कुल खड़े रह के बात नहीं करना है. और यू आर रिहर्सिंग, continuously rehearsing, then vocal cords normally they vibrate at 100 to 200 times per second. और आप कंटिन्यूअस कितने सारे घंटे अगर रिहर्स करते हो, तो मिलियन टाइम्स हो जाता है उसका वाइब्रेशन. तो Correct. आप इमेजिन करो कि उसको कितना इंजरी हो जाएगा. So this polyp is actually a small mass of the mucosa, which just Okay. gets elongated because of trauma, and it becomes a little bit pedunculated. Mostly polyps they appear pinkish, Okay. and क्या होता है कि vocal cord फिर close नहीं हो पाता है properly. अगर Correct. ये पॉलिप रहेगा, तो आप बात बराबर से अगर क्लोजर नहीं, जैसे मैंने बोला, जब एयर फिल होती है लंग में, तो आपके वोकल कॉर्ड्स टाइट क्लोज होने चाहिए, तभी आप बात कर पाओगे. तो अगर ये पॉलिप रहेगा तो आपके वोकल कॉर्ड्स क्लोज नहीं होंगे. देयर विल बी एस्केप ऑफ एयर थ्रू द वोकल Correct. कॉर्ड्स, एंड देयर विल बी होर्सनेस ऑफ वॉइस. पिछले एंड साल द की अगर पेश. वीडियो आप लोग देखेंगे, जो लोग देख रहे हैं, पिछले साल का अगर वीडियो देखेंगे मेरा इंडिया वॉइस फेस्ट का, तो मेरी आवाज वॉज दैट वॉइस विच हैड अ पॉलिप. और जो मेरे वोकल कॉर्ड बंद नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से आवाज में होसनेस भी थी, और मेरे जो लोअर नोट्स हैं आवाज के वो गायब हो गए थे, और टूट टूट के आवाज आ रही थी. तो जो मैम बता रही हैं, उसकी जो सिम्टम्स बता रही हैं, वो दैट इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. यस मैम. Yeah, so normally this polyp it does not go off with medications. So the treatment is earliest detection,
एंड और ज़्यादा दूसरी तरफ उसका इफेक्ट ना आए, इसके लिए डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करना पड़ता है. लाइक सर्जरी इज करेक्ट. द ओनली ट्रीटमेंट फॉर पॉलिप. एंड आफ्टर सर्जरी नॉर्मली हम लोग यू हैव टू लर्न to speak Yeah. so that again this problem does not happen. Speaking properly and maintaining vocal hygiene, then Yeah. only the recurrence of the polyp does not happen. बहुत लोगों को Absolutely. ऐसे लगता है एक बार निकल गया तो अभी वापस कुछ नहीं होने वाला है, बट द थिंग इज दे डोंट इम्प्रूव, एंड वापस अगर होर्सनेस हो गया तो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है. Yeah, the next slide is very much common in all general public. That is the Okay. laryngopharyngeal reflux. Laryngopharyngeal Laryngo, reflux. Okay. yeah. So this is actually the reflux of the acids from the stomach. And if you have heard GERD, GERD is actually a reflux only, but that is from the stomach. It just comes up to the esophagus, and you have a heartburn. जैसे जिसको जलन हम कहते होती है हैं सीने एसिड में. एसिड रिफ्लक्स, लेमैन लैंग्वेज में या कहते हैं या छाती यस में जलन यस हो रही है, एसिड जलन होती रिफ्लक्स है. हो गया है. तो आप बट ये कह रही हैं ये कि वो वो बहुत नहीं है, इंपॉर्टेंट है गले के लिए. ये वो नहीं है. अच्छा, ये वो ये नहीं है. उप, ये एसिड्स ऊपर आ जाते हैं. इसमें एसिड्स ऊपर आ जाते हैं. इसमें ऊपर वाला इसोफेगस का जो स्पिंक्टर रहता है वो बराबर से बंद नहीं होता है और ऊपर आ जाते हैं, एंड जी. टू द लैरिंग्स, द फेरिंग्स एंड द नेजल कैविटी. ओके. तो आपके मुंह में ऐसा बिटर टेस्ट आता है, एंड आपके वोकल कॉर्ड्स पे वो एसिड्स वॉश होते हैं आफ्टर स्टमक. एसिड्स आर ही ना, that causes the congestion of the vocal cords, ओके. and the vocal cords पे mucus कलेक्ट होता है, redness आता है, ओके. and the ओके. voice of the patient becomes hoarse. Like उनको हमेशा ओके. clearing of the throat करना पड़ता है. this type of करना पड़ता है हमेशा. करेक्ट. करेक्ट. तो इसका इलाज ये है कि आपको बराबर से बात करनी चाहिए, and you have to take anti-acidity medicines. ओके. सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि आमतौर पर लोग गले को गले की तरह देखते हैं और उन्हें लगता है कि गले की खराश की दवाई लो या गले के लिए कुछ दवाई लो. पर आप ये कह रही हैं कि हमारी बॉडी का एसिड जो रिफ्लक्स होता है इस तरह का जो आपने कहा, दिस मतलब गले गले को ठीक रखने के लिए समटाइम्स यू नीड टू टेक एसिडिटी की दवाई. सो ये आप में से जो लोग इस एसिडिटी बारे की में नहीं दवाई जानते लेना थे. पड़ेगा, पर हाँ, एसिडिटी इमेजिन की दवाई आप कितना ले पाओगे? कितना आपको ले पाएंगे. करेक्ट. आपके लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा. करेक्ट. लाइफस्टाइल में सुधार करना है यानी बहुत सारा पानी पीना है. आपको एसिडिटी वाला फूड कम खाना है, ऑयली स्पाइसी फूड कम खाना है. फिर वेरी आपको इंपॉर्टेंट. आपका मील अर्ली रखना है, यानी रात का खाना आपको थोड़ा जल्दी खाना है. आपके करेक्ट. प्रोफेशन में आई नो इट इज वेरी हेवायर. आपका प्रोफेशन डिमांड्स लाइक नाइट ड्यूटीज एंड ऑल, बट नहीं, इफ नहीं, यू ऐसा ऐसा मेंटेन. कुछ नहीं है मैडम. ये ना, ये बहुत, दिस इज़ बाय वेरी ओवररेटेड. ऐसा कुछ नहीं है. नाइट ड्यूटी वाले वॉचमैन अब हम लोग नहीं रहे और सब मज़े सॉरी. से सब हम लोग ध्यान रख सकते हैं रखने को. मैं भी यही काम करता हूँ और मेरा बहुत ही बैलेंस लाइफ़स्टाइल है. वक़्त पे खाता हूँ, वक़्त पे सोता हूँ और वक़्त पे काम भी करता हूँ. तो ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ योर ओन प्रायोरिटी. तो आप जो कह रही हैं वो एकदम सही है. It is very imperative that people, take care of their lifestyle, and the food is what you are saying, that the food plays a very, very important role. यस यस डेफिनेटली. चॉकलेट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये अगर आप प्रिवेंट करोगे या स्पाइसी ऑयली फूड प्रिवेंट करोगे तो आपका ये रिफ्लक्स ये कम हो सकता है डेफिनेटली. एंड Okay. एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ मस्ट. Fantastic. I दी think these are very important points, guys. कि इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही. एक तो ऑब्वियसली ऑयली फूड कम खाना चाहिए
गले के लिए और पेट के लिए जो कनेक्टेड है एक तरीके से. बट इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही, स्मोकिंग. सो डॉक्टर सुर्वे, ऑन दिस नोट आई वांट टू आस्क यू इफ यू कैन टेल अस इन ब्रीफ कि हम में से कई लोग हैं, नॉट मी, आई एम आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, and definitely not me, I don't smoke at all, but a lot of people, especially voice over artists, उनके मन में एक गलत धारणा है कि स्मोक करने से भारी आवाज़ हो जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी. तो मैं तो जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, पर अगर आप बताएंगी लोगों को कि आवाज़ के लिए स्मोक क्यों नहीं करना चाहिए, आई थिंक दैट विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट. दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेशन. सो प्लीज टेल अस व्हाई अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट should not smoke. See, a smoking is ultimately taking fumes inside your larynx. That fumes are of nicotine and they will cause erosion of your vocal cords and the surrounding area. Ultimately, over the years, your vocal cords will become, they won't have the mucus on it. It has a thin layer of mucus on it. And because of that mucus, the vocal cords, they slide or glide properly. अगर ये म्यूकस ही नहीं रहा, उसका ल्यूब्रिकेशन नहीं रहा, तो आपका आवाज होर्स हो जाएगा. You will have a chronic cough. The cough will ultimately, chronic cough will have the swelling of the vocal cords, and then you will have these polyp or nodule or cyst एंड हिमरेज. अगर बहुत सारा कफ आने लगा, ड्राई कफ होता है, स्मोकर्स कफ इज अ ड्राई कफ, तो आपको हिमरेज भी हो सकता है. तो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स विच इज बेस्ड वेयर यू विल हैव टू स्पीक. तो आपको स्मोकिंग तो रुकवाना ही पड़ेगा, बी इट एन एक्टिव स्मोकिंग और अ पैसिव स्मोकिंग. I to tell patients don't stand where there is some passive smoking or in a pub where there is lot of smoke. You should not. The on that note, other things are like the hit spray or good night, which have secrete fumes, or your deos for that matter, which are fumes. They directly hit your chest and you will have allergies. Allergies will lead to mucus creations and ultimately the vocal cords will have inflammation and hoarseness of voice. Fair, fair, fair. I think that's a very very important point. One question that I also had was, like I was asking you earlier, a very practical question. When does one know ki, how when does one know that one needs a medical intervention for the voice, which is beyond your regular. Usually people go to a general practitioner, which is not wrong. It is the most natural thing to do, to go to a GP, as we say, कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है. When should one come to you? When should one come to a self voice specialist? inspection self inspection is like, if you say you are well versed with the notes, if you cannot reach a certain note, like the higher notes you cannot reach, like in the vocal cord nodule, if you say happy birthday and you continuously say happy birthday and you cannot reach that note, it is a sign of going to a doctor, a Okay. specialist. And a hoarseness where all the treatments have been done in the first week, you are not taking rest. You Even if you have taken rest for 7 days and still the hoarseness persists, then we say that we need to see the vocal cords. Yeah, that's a very practical, way to understand कि अगर हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है और आपका गला ठीक नहीं हो रहा है, होर्सनेस है, और जैसा इन्होंने कहा कि अगर आप अपना जो आपका पोटेंशियल जो रेंज है, जो रेगुलर रेंज ऑफ या वोकल रेंज जिसको हम कहते हैं, अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करें, तो आपको लग रहा है कि आप वो उन रेंज पे नहीं जा पा रहे हैं, देन इट इज़ टाइम टू विजिट एन ENT. एंड आई थिंक हमारे लिए एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट or a dubbing artist or a narrator, it is so important for all of us. I think traditionally हम लोग denial में रहते आए हैं, पर आज आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए ये सेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू सुभव. सुभव बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं. उन्होंने बहुत प्यारी लाइन लिखी कि इतना अच्छा लग रहा है कि एक 360 डिग्री होलिस्टिक वे ऑफ होलिस्टिक सेशंस हो रहे हैं, जहाँ पर ना सिर्फ वॉइस ओवर्स की बातें हो रही है, बल्कि हेल्थ और वेलनेस की भी बात हो रही है वॉइस की. सो आई थिंक वन थिंग दैट is very important to understand, thanks to Dr. Surve, is that one needs to become
uh, accept accepting of visiting an ENT. Visiting an ENT should not be a red flag. It should be as normal as going to a general practitioner for a बुखार के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसी तरह गले के लिए ENT के पास जाना चाहिए आपको. एक बात कहना चाहूँगी कि आप वॉइस को सिर्फ वॉइस मैं ठीक रखूँगा ऐसे मत सोचो. यू Okay. हैव टू कीप योर बॉडी परफेक्ट, देन ओनली योर वॉइस विल बी परफेक्ट. This we How go to true? the How vocal, true? yeah, so this we go to the vocal care. Can we go to the vocal care now? Sure, Like sure, sure. yeah, because that is more important for y'all. Of course. Yeah, this is just a common thing, that is the vocal cyst Okay. and vocal hemorrhage, where I told if you have a very अगर आप बहुत गुस्सा हो एंड आप एकदम से ब्लर्ट आउट करते हो या बहुत लॉन्ग आप बात करते हो तो हिमरेज हो सकता है, जहाँ पे पेशेंट्स नॉर्मली से कि एक कर्टेन आ गया, मैं बात कर रहा था और मेरे आवाज पे एक कर्टेन आ गया. तो वोकल हिमरेज पे, वोकल कॉर्ड हिमरेज में पेशेंट्स ऑलवेज द आर्टिस्ट दे से कर्टेन आ जाता है. तो अगर दिस डिटेक्शन हैपेंस ओनली विद द specialist, only with the stroboscope या endoscopy. Okay. Then the vocal cord paralysis. Vocal cord paralysis happens due to the nerves, and the viral also. वायरस में भी वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है, बट वायरस में रिकवरी भी हो जाती है. इट इज नॉट अ पैरालिसिस एग्जैक्टली, बट पैरासिस हो जाता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स दे बिकम वीक. Okay. एंड नर्व्स में अगर सर्जिकल या कोई मास है लंग्स में तो नर्व्स पैरालिसिस हो जाता है, जहाँ पे पेशेंट बात नहीं कर पाता है. तो इसका ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी होता है एंड होर्सनेस हो जाता है, या फिर एस्पिरेशन हो जाता है, यानी कुछ भी पानी पीता है तो गले लंग्स में चला जाता है, उसको खांसी Okay. आने लगती है. तो Okay. डिटेक्शन इज ओनली बाय दिस एंडोस्कोपी. Okay. And now coming to your basic thing, that is the vocal Very, very cord important. hygiene. Everyone who is watching, please pay attention to the do's and don'ts. क्योंकि सब लोग ये पूछ रहे हैं कैसे ध्यान रखें, क्या करें. So I guess ये तो slide है, but it will be nice if अगर आप if you can Yes, say I it. will definitely speak about it. Yeah. Voice is, you should remember, voiceover artist should definitely remember that voice is like an instrument fitted in your body. जो इंस्ट्रूमेंट आपको एक ही बार मिलता है, आपको बार बार रिप्लेस करने से वो नहीं मिलेगा. तो Correct. आपको वो इंस्ट्रूमेंट का बहुत बहुत केयर रखना है. देयर इज द डूज ऑफ द वोकल केयर इज दैट आपको बहुत सारा हाइड्रेशन रखना है वॉइस का और योर बॉडी. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, आप पानी की बॉटल हमेशा साथ में रखिए. यू हैव टू ड्रिंक 8 glasses of 8 glasses of water the whole day. एंड पानी इसके लिए जरूरी है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स पे एक थिन म्यूकस लेयर रहता है. तो पानी जब आप पीते हो तो वो म्यूकस लेयर थिनर हो जाता है एंड दिस म्यूकस over the vocal cords it just slips off into your esophagus. तो आपको वॉइस क्लियर भी नहीं करना पड़ता है हमेशा. It will become moisturized and your voice quality will improve. So water is a very much important part. Okay, and I also keep water with me every time because I also speak. अभी खत्म हुई है बॉटल, एक और आ रही. Yeah. वाटर जनरली पीपल से कि हम लोग बहुत सारा लिक्विड्स पीते हैं लाइक कैफीन. Coffee is a trend nowadays, but caffeine is not a replacement for water because caffeine causes dehydration of the vocal cords. And फिर आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है. तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत सारा कॉफी इज वेरी हार्मफुल. कॉफी, अल्कोहल, यू शुड लिमिट योर सेल्फ. एंड दी पानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो योर वोकल हाइजीन विल बी मेंटेन्ड.
और Mm-hmm. आपका आवाज क्लियर आ जाएगा. इफ यू हैव Okay. सीन, जो क्लासिकल सिंगर्स हैं वो हमेशा बाजू में एक पानी का लोटा या पानी का ग्लास रखते थे, because they have to sip it, to keep it moisturized. Mm-hmm. Yeah. So this is for the internal body. Externally hydration कैसे रखोगे? Like अगर आपका ड्राई एरिया है जहाँ पे आप हो, तो आपको लाइक डेजर्ट्स और समवेयर, तो बहुत सारा ड्राइनेस होता है, या अभी भी बहुत सारा ड्राइनेस है, तो आपको ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो आपके यहाँ पे जहाँ पे आप बात करते हो. Okay. Then for a moisturizer you can always have steam जो रहता है, steam inhalation, that will Steam also inhalation. Yeah. liquefy. या पर आप गैस पे रखा हुआ बर्तन में से स्टीम नहीं लेना, Okay. वो बर्न करेगा. Okay. फिर अगर Interesting. Okay. वार्म वार्म आपका क्लॉथ है, तो वो आप अगर माउथ पे रखोगे, तो दैट ऑल्सो विल हेल्प टू Wow. मॉइस्चराइज योर वोकल कॉर्ड्स. Imagine, ये तो हम कोई imagine नहीं कर सकता था कि keeping a warm cloth on your mouth, it will help. It Yeah, will help you. mouth में, Wow. and you Okay. breathe through it, so that will Wow. also help. And this is for the hydration. Okay. You can eat lots of fruits like strawberry, blueberries, cucumber, melons. They have lots of water. You can increase that intake, reduce alcohol intake. And coming to the next point, this is hydration. The next point is to do is to have frequent gaps in your if you are speaking quite a bit, you have to have frequent gaps Yeah. in your speech, आई थिंक where इसको you will. लेकर ही एक सवाल है सुजाना का कि ये लिख रही हैं शी इज़ अ फ्रेंच टीचर, शी स्पीक्स फॉर 5 to 7 hours एवरी डे, और ये पूछ रही हैं कि क्या कोई लिमिट है कि कितनी देर आदमी बात करना चाहिए. तो आई थिंक आपको इस, आई एम नॉट श्योर कि कोई लिमिट होती है ऐसी, बट आई थिंक व्हाट द डॉक्टर लिमिट इज तो नहीं सजेस्टिंग है, इज गिव बट गैप्स. यू विल हैव टू हैव वार्म अप ऑफ योर वॉइस. या. वार्म अप एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे आपको. लाइक देर इज, जैसे बचपन में बच्चे लोग स्कूटर ऐसे ट्रिल. ब्रेस करके, ब्रिम करके करते हैं, तो दैट इज करेक्ट. द वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज. द लाइक अ अदर वोकल, एक्सरसाइजेस, like a lip trill or a yeah tongue trill, yeah is yeah that what? yeah yeah, that warm up exercise you will have to do every Yeah. day, 2 to 3 minutes in a day. And before she goes for the teaching, she should keep a water bottle, she should take small sips of water, and before starting she should have this warm up exercises. Then every day she should do this Okay. stretching and this stretching also. Okay. ये स्ट्रेच करना चाहिए. एंड एक्सरसाइज ऑफ द लंग्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये उनको जरूरी है. एंड गैप्स शी शुड टेक, द बेस्ट वे इज टू आस्क द स्टूडेंट्स टू आंसर, सो शी कैन कीप क्वाइट इन बिटवीन रादर देन एक, स्पीक. हाँ, और एक चीज मैं इंटरैक्टिव. नोटिस करता हूँ, that's an interesting point. एक चीज नोटिस करता हूँ, टीचर्स टेंड टू स्पीक एट अ वेरी हाई नोट. आदत पड़ जाती है ऊंचे नोट पे बात करने की, क्योंकि सामने बहुत स्टूडेंट्स हैं. माइक्रोफोन, हाँ, तो माइक्रोफोन, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं. microphone is there. And you can always there is don'ts. इसमें don't एक है कि one arm के distance के आगे आप बात नहीं करना है. हाँ, मतलब वाह, दैट इज अमेजिंग. one ये अपने बड़े yeah कमाल की one बात बोली है arm, yeah कि आप yeah one इमेजिन arm कीजिए के कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपके एक हाथ के डिस्टेंस पे खड़ा है, और आपको उस नोट पर बात करना है ताकि उतना तक yes. उस डिस्टेंस पर आदमी को सुनाई दे. ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज सच अ प्रेशियस पॉइंट. आई थिंक इससे आप जिस नोट पे बात करते हैं, जितना आप स्ट्रेस देते हैं, जैसे इस वक्त अगर आप देखें हम जो बात कर रहे हैं, कहने को मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ कहाँ देश के किस कोने में हैं, पर मैं तो जैसे पहले ज़माने में जब अमेरिका से फ़ोन आता था तो लोग अलग ही नोट पे चिल्ला के बात करते थे कि एसटीडी आईएसडी फ़ोन है. तो वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी आवाज़ अमेरिका तक जाएगी, आपको बात तो फ़ोन के अंदर ही करनी है, जबकि फ़ोन को सुनाई दे. उसी तरह आई थिंक व्हाट डॉक्टर सुरवे इज सेइंग के
अपने नोट को संभालिए, डोंट स्पीक एट अ वेरी हाई नोट फिजूल में, वरना यू विल ओनली टायर योर वॉइस. Yes, across the room, in a noisy room, you should not be speaking. करेक्ट. आपको अगर किसी पर्सन से बात करनी है अक्रॉस द रूम, देन यू विल हैव टू कॉल दैट पर्सन नियर बाय क्लैपिंग और बाय अदर मीन्स, एंड देन ओनली स्पीक. इफ यू आर इन अ नॉइजी रूम और अ गैदरिंग, put a earplug in your ears and then speak, so you will know how loudly you're speaking. हाँ, ये Because इंटरेस्टिंग. कई without, बार ऐसा होता है, हमने हेडफोन पहने होते हैं और हम ऊंचा बोलने लग जाते हैं क्योंकि वी कांट या सो एक ही म्यूजिक कान सुन में के. रखो, एक ही हाँ, कान में रखो, तो एक ही कान में आपको हेडफोन. आपका करेक्ट. आपका वॉइस आप बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज ओह, यू कैन नॉट बैलेंस दैट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी या. इंटरेस्टिंग. यस. Ma'am, देन दे. Rajiv, sorry, yeah, please. या यू कैन. No, यस there's आज. a viewer, Rajiv, is asking, and I think that's an interesting question. Is an energy drink good for the throat of a voice artist? सी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं अच्छे हैं. The only thing you can drink is there are some sweet sugar drinks. You can drink that, but I don't think so. Energy drinks, उसमें भी chemicals रहेंगे. Once in a while you can drink, but not regularly. हाँ, तो राजीव, अगर आपको जवाब मिल गया, अगर आप मिक्सर के तौर पर यूज कर रहे हैं तो गो इजी ऑन इट. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी में लो, बिल्कुल पानी में नहीं. लो. रादर सिर्फ पानी लो, सिर्फ पानी, नीट वाटर, दैट्स इट. See, alcohol also will cause, over a long period, it will cause a reflux ऑफ कोर्स. and acidity. So I feel so you should take care. I think so the bigger artists, they must be taking care of all this. Sleep is a very good asset. आपको बहुत अच्छी sleep होनी ही चाहिए. Can I see my slide? या. Last slide, do's and don'ts. या. सी दर्पण जी, मैंने इसमें लिखा है कि लास्ट में कि आपको यू हैव टू हैव मेडिटेशन एंड योगा. मेडिटेशन एंड योगा इसके लिए बोल रही हूँ कि यू विल हैव कंट्रोल ऑन योर एंगर. when you करेक्ट. are angry or in a brawl with somebody, कोई भी आके आपकी गाड़ी ठोकता है और आप जाके झगड़ा करने लगते हो, या with a slight thing you want to speak out, you blurt out. Over there you are building pressure in your lungs and blurting out. This is very harmful for your vocal cords. This will cause a very bad injury like a hemorrhage, or it will cause a vocal nodule or polyp. तो So जिसकी that's वजह से that's a very आपको important, that's an आपको important don't. एंगर बहुत कंट्रोल में रखना है. Correct. या. So what you're saying is, what I think, if I try to summarize this, especially this segment, I think in a nutshell, what you are saying is, uh, vocal care is a very holistic subject, and vocal care Yes. is not limited to taking care of this physical, of the tissue or the physical vocal cord, or what you call the voice. Your vocal care is a part of your entire being, your entire personality, whether it is taking care of your physical fitness, or whether taking care of your mental fitness. The more calmer you are, the more in control, the more quieter your mind is, the more better control you will have over your speech, and the better your breathing pattern is, the better your voice control will be. I think that's a very very interesting way to put this. Ma'am, someone asked, is tea also as harmful as coffee? Tea will cause acidity. If a person Okay. is having migraine, I normally tell avoid tea, chocolates, caffeine, and tur dal, and early Tur dal. sleeping over. Yeah, yeah. Tur dal also triggers acidity. So you अरे, ये तो have बड़े to कमाल की limit. बात. तुअर दाल, guys. तुअर दाल. Who could have Yes, imagined? yes, This is coming from yes, Dr. yes. Deepa Surve. Tuar dal should be avoided for vocal Yes, yes. If you hygiene. have migraine or acid reflux, you will have to avoid that, because with migraine, you tend to have recurrent acidity, and that will cause harm to your vocal cords. Okay. Sleep Very, is very very much interesting. important. Sleep is very much important. आप सोचो, आप अगर काम हो तो ही आप वॉइस को अच्छे से थ्रो कर सकते हो. Correct.
एब्सोल्युटली। नहीं, नहीं, सोना तो बहुत कमाल की चीज़ है। मैं कई बार जोक करता हूँ कि सोना मेरा शौक है और पैशन भी। मुझे बहुत पसंद है। मैं हर रोज़ रात को सोता हूँ और बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सुनने में बड़ा फ़नी लगेगा कि रात को सोता हूँ, बट कई लोग हैं जो रातों को नहीं सोते हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन दैट लिटिल बायोलॉजिकल थिंग ऑफ स्लीपिंग, ऑफ हैविंग अ गुड नाइट्स स्लीप, एंड इट डज़ वंडर्स टू योर एंटायर बीइंग एंड टू द वॉइस आल्सो मैम। एब्सोल्युटली। Uh, to mug up, Darpanji, diaphragmatic breathing is much more important for voiceover artists. या, Voiceover artists should learn diaphragmatic breathing, not from the lungs, but from the diaphragm. So your posture has to be erect. Your shoulders should be very straight, and you should breathe from your abdomen. दिस प्रैक्टिस हैज टू बी डन. अगर बैठे बैठे नहीं हो पाता है तो आप लेट जाओ स्ट्रेट, एक बुक रखो आपके एब्डोमेन पे, और वो बुक मूव होना चाहिए. यू हैव टू लर्न दैट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सो दैट द प्रेशर डज नॉट हैपन ऑन योर चेस्ट एंड द वोकल कॉर्ड. जब दैट्स अ आप वंडरफुल डायफ्रामेटिक, एक्सरसाइज। या, या दैट्स अ या वंडरफुल दैट पैटर्न दैट इज, यू आर सेइंग कि लेट के किताब रखें अपने बेली पर, और देखें जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो जैसे बलून फूंकता है, वैसे कहीं ना कहीं आपका 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 जो बेली हल्का सा ऊपर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो जैसे बलून डिफ्लेट होता है, दैट वे योर बेली शुड डिफ्लेट, एंड यू शुड डू दैट अ फ्यू यस, टाइम्स। ये एक्सरसाइज आपको एवरी डे करनी चाहिए. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू द वन विच स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आई टोल्ड यू. देन द अदर एक्सरसाइज इज द प्रिल एक्सरसाइज. एंड आपको एवरी डे नोट्स बराबर, लाइक यू हैव टू मेंटेन अ पैटर्न, लाइक this I cannot, I am not used to it, but you Fair. definitely will know that this note has to be maintained. And आप एवरी डे अगर ये एक्सरसाइज करोगे तो योर नोट्स, यू कैन मेंटेन दैट ब्रेथ फॉर दिस नोट. या, और नोट करें, आप नोट करें कि उस नोट को आप क्या ड्यूरेशन तक मेंटेन कर रहे हैं। अ, यस, अपने ब्रेथ को कंस्ट्रेंट नहीं करें, डोंट मेक इट लाइक, गले को दबाइए मत। एक अच्छी सी श्वास लीजिए, और उसी सांस को आप छोड़ते हुए एक नोट को एक्सेल कीजिए, और देखिए अपने स्टॉप वॉच में, फोन पर आप देखिए कि उस नोट को आप कितने सेकंड तक एक्सेल कर रहे हैं। और ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दैट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल नॉट हैपन इन वन डे, it will not happen in one week, it will happen gradually over a period of time. You will realize that you are able to sustain that note for a longer period of time. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमें कई बार बहुत तेज बोलना पड़ता है, बहुत कम टाइम में काफ़ी सारे शब्दों को स्क्वीज करना पड़ता है डब करते वक्त या वॉइस ओवर करते वक्त। तो ऐसे में इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन, in one breath, if you're able to say more words, I think it means that you have good control over your breath. Is that correct, ma'am? yes. And the other thing is that there is resonance in your chest. Like if you place your hand on your chest, there is, if you say you have a Yeah, resonating effect, then correct. your larynx, you will have to say this exercise also, you will have to do. Oh, this also. And when it comes to the pharynx, then you will have to do again the same way. Then it goes to your nose, nasal. अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि Oh, उसके लिए आप हायर नोट पे करें, थोड़ा हायर नोट पे करें। yes, ओके। yes. But this exercise also you will have to do every day. ऑफ कोर्स। I'll just take a few questions that are here, ma'am. एक Yeah. तो इन किसी ने पूछा है कि chewing gum, does it help keep the throat moist? Is there Chewing gum थोड़े देर के लिए moist रखेगा, but water cannot be replaced by water anything is the else. elixir of life? So Yes, chewing gum ये कह रही water. हैं कि शॉर्ट टर्म And the इलाज है, but it is second not a moisturizing thing is to keep quiet. आप correct. अगर चुप बैठोगे तो आपका सलाइवा बिल्टअप होता जाएगा, योर वॉइस और योर माउथ वोंट ड्राई. जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं हवा ले रही हूँ मुंह में, माई माउथ इज गेटिंग ड्राई. सो Correct. सिमिलर वे आप भी रिहर्स करते हो, आप भी बात करते हो, तो योर वॉइस विल गेट ड्राई. सो इन बिटवीन द क्रक्स इज दैट यू हैव टू हैव ब्रेक्स, साइलेंट. You have to have silence Yeah. in Silence between. is as important for your voice as you think speaking is. So that is also important. किसी ने पूछा है कि
Da कि breathing from the diaphragm makes me feel a little lightheaded or kind of dizzy. Is it normal? यू विल गेट अडेप्टेड टू इट. आपको Yeah. प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग सीखना पड़ेगा. आप शायद जोर से कर रहे हैं, हाँ बहुत जोर से ना करें, हाँ रिलैक्स्ड वे में करें. रिलैक्स हाँ, ये योर बात समझनी बहुत मसल्स. ज़रूरी है. हाँ, ये या ये आपने अगर बड़े आप कमाल बहुत की बात जोर कही जोर कि से ब्रीथ हाँ, करोगे तो अल्टीमेटली हाँ, यू विल गेट अत्याचार मत करिए. एग्जॉस्टेड. हाँ, अत्याचार मत करिए. कोई ये कसरत नहीं है. इसको बहुत एक मेडिटेटिव तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से आपका शरीर, आपकी सांस है, तो उसको आप जैसे कई बार करते हैं ना, वो बहुत बहुत अग्रेसिव तरीके से ब्रीदिंग करते हैं. तो मुझे मेरी एक वोकल कोच ने बहुत कमाल की बात कही थी कि यार, जब हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं दिन में, जो हम सांस तो सब लेते हैं ना, तो हम थोड़ी इस तरह से सांस नहीं लेते हैं. तो अगर आपको अपनी सांस पर काम करना है तो उसी तरह करिए जैसे आप सांस लेते हैं. वो बहुत ही एक सबलाइम लेवल पर होना चाहिए. हम सब बात करें, हम सांस तो ले रहे हैं, सांस रोक के तो बात नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक कि मैम ने सही कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो टेक इट ईजी. कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई जल्दी मत करिए. मैम, एक सवाल मेरे से मिस आउट हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दही, ये मैं जानता हूँ कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि इज हैविंग कर्ड गुड फॉर द वॉइस, इज इट बैड फॉर द वॉइस? सी दही अल्टीमेटली आपका वोकल कॉर्ड्स पे नहीं जाने वाला है. इफ अ पर्सन इज एलर्जिक टू दही, लाइक उसमें प्रोटीन्स रहता है, तो अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही यानी दूध का दही, ना कि आप मलाई वाला दही खाएं, तो आपको एलर्जीज नहीं होंगे. और फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही यानी पहले वाले रात को भी लगाएं और दूसरे दिन आप सुबह खाएं, तो आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम हो सकता है. पर अगर जिनको लैक्टोजन एलर्जी है दे शुड अवॉइड, क्योंकि खांसी हो जाएगी. खांसी हो गई तो फिर साइनोसाइटिस हो जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा फिर. ओके ओके ओके, लवली. जिन्होंने पूछा था ये लाइट हेडेड का, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब से अत्याचार नहीं करूंगा. और यार, हंसा करो, हंसो, खिलखिलाओ. लाइफ में सिंसियर होना चाहिए, सीरियस नहीं. और या मैंने आई तो नो. डॉक्टर सुरभि से बहुत कुछ सीखा है ओवर द इयर्स. और बट आई थिंक मुझे सबसे स्ट्राइकिंग बात इनकी ये लगती है, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ किसी वॉइस रिलेटेड या थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम से, सो शी इज़ दैट टिपिकल वेरी ओल्ड स्कूल डॉक्टर. बहुत बड़े रेयर ब्रीड है ये आज की तारीख में, जहाँ पर हर फोकस इज नेवर ऑन मेडिसिन. इस पूरे कॉन्वर्जेशन में हम एक सवा घंटा हो गया है, एक बार भी हमने दवाई की बात नहीं की है, जबकि सारे इश्यूज की बात की. इनका जोर हमेशा रहता है ऑन होलिस्टिक वेलनेस. और ये हमेशा कहती हैं मेडिटेट करो, अच्छे से सो, शांत रहो, और लुक एट your voice as a part of your entire being. You cannot look at voice in isolation. But दर्पण जी, yes. एक बात बोलना चाहूंगी कि आई हैव ऑलवेज लर्न टू बी पोलाइट एंड टू मेडिसिन से ज्यादा आधी बीमारी आपकी बात करने से खत्म हो जाती है. दिस आई हैव लर्न फ्रॉम माई टीचर्स. सो आई हैव मेड माई सेल्फ टॉक लाइक दैट वे. या वो एक अभी आदत सी हो गई है कि पहला हिस्ट्री लो पेशेंट्स का, उनसे प्यार से बात करो, तभी उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, How उनको sweet. कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हाउ वंडरफुल. आई थिंक इससे बेहतर तरीके से हम आज के इस कॉन्वर्जेशन का समापन नहीं कर सकते थे. आपने अपने टीचर से ये सीखा है, और आज आप हम सब के लिए एक टीचर के तौर पर आई हैं. और इतना वी हैड सच अ वंडरफुल होलिस्टिक डिस्कशन अबाउट वॉइस. एंड वो इतने सारे जो पचासों पचासों कमेंट्स आ रहे हैं, और इतना लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, दैट पीपल आर एंजॉयिंग दिस सेशन सो मच, एंड हाउ मच दे आर थैंकिंग अस, ऑल ऑफ अस, एंड स्पेशली यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टू डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस. एंड आप में से जो लोग देख रहे हैं, आपको बता दूं कि 11 तारीख को डॉक्टर दीपा सुरवे विल बी विद अस फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट एट रंग शारदा. तो आप में से जिनको उनका ऑटोग्राफ लेना है, या जिनको उनसे कंसल्ट करने के लिए उनका नंबर लेना है, आप लोग अगर आप रंग शारदा में होंगे तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट हर. एंड ma'am, if people want to consult you, what is the best way to reach you? My telephone number and Okay, yeah, so I tell my telephone number, like, absolutely, absolutely, yeah, please. 9892 625970. This is my telephone number.
she's one of the most amazing doctors that I have known in my life, not just as an ENT, but doctor as a person. And it has been my absolute privilege, Dr. Surve, to have you with us for India Voice Fest. And I cannot thank you Thank enough. you, thank you, thank And you, I'm thank looking you very forward much. to see you on the 11th of December at Rangshada. Please join us. We would like to Yes, thank you surely. on stage, and it'll be wonderful to meet you once again, and not in your clinic. So, Thank you, thank you. I would say that voiceover artists are doing a wonderful job. You should do with a passionate. You should have a passion, and with passionately, you should work about. Have a positive attitude. Keep calm. If you have a concert, please keep silent before your concert, so that you will sail through very properly with your voice. how wonderful! How wonderful! That's a great way to end this session. And I'm sorry to the panelists of the next session. Hum thoda sa, we Sorry. overshot the time that we had. But I think everyone, I'm sure, even the panelists who are already backstage in the studio, I'm sure everyone enjoyed this insightful, this very learned session that we had with you today. So thank you, ma'am. I'll see you Thank you on very the 11th much. of December. Thank you for being a Sure. part of India Voice Fest. Thank you once again. Bye Thank you. bye. Thank you.